अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैराबोला ऑफ सेफ्टी दैट इज फॉर अ गिवन launch velocity v and a launch angle theta. The parabola of safety or safety parabola is the envelope of the parabola trajectories of the projectile. So अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से शूट करें विद एन एंगल, हमारे पास लेट्स से ये थीटा एंगल है, थीटा 1 है, फर्स्ट करें हमारे पास ये वाला थीटा 1 से करें और ये हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। फिर इसका एंगल हम डिफरेंट करें और फिर ये एक दूसरी ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, देन हम इसका एंगल डिफरेंट करते जाते हैं तो ये एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री बनाता जाता है। बट यू कैन ऑब्जर्व दिस कि ये हमारे पास जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज बन रही हैं ये इस हमारे पास एक कर्व को, जो पैराबोलिक कर्व है हमारे पास, इसको टच कर रही हैं। These are making the envelope of a parabolic structure. Now we have a Cartesian equation of trajectory of a projectile, which is y is equal to x tan of alpha minus gx square over 2 v naught square secant square alpha. अब हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं. Let's write this as x tan of alpha minus gx square over 2v naught square और secant square को हम लिख सकते हैं 1 plus tan square alpha. So हम इसको लिख सकते हैं x tan of alpha minus gx square over 2v naught squared minus gx square over 2v naught square tan square alpha. Now we can write this as gx square over 2v naught square tangent square alpha minus x tan alpha plus g of x square over 2v naught square plus y. Now this is equation in quadratic in tan alpha. अब हम इस एनवेलप के लिए, जो कि हमारे पास ये एनवेलप एक्चुअली बन रहा है जिसमें हम ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हैं, ये अंडर दिस एनवेलप है हमारे पास एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा. नाउ हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम यूनिटी डी से डिनोट कर देते हैं. सो इफ दिस डी इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है हमारे पास दो रियल सोल्यूशन होंगे. अगर ये हमारे पास डी लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रियल सोल्यूशंस नहीं हैं, कोई हमारे पास इमेजिनरी सोल्यूशंस होंगे कम्प्लेक्स नंबर्स में. और अगर ये डी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास वन रियल सोल्यूशन होगा. सो फॉर दिस पैराबोला ऑफ सेफ्टी हमें इस डी को 0 रखना है. सो हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, विच मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ए टर्म ये है, बी हमारे पास ये टर्म है और सी हमारे पास ये टर्म है. सो दिस इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac. सो बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 is gx square over 2v naught square and c is gx square over 2v naught square plus y. So put this is equal to 0 for the real solution of this quadratic equation. अब इस इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो दिस विल बिकम 1 minus 4 into g of v naught square. दिस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम g ऑफ x स्क्वायर प्लस 2v नॉट स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन टेक दिस g इन कॉमन और हम इसको gx स्क्वायर प्लस 2v नॉट स्क्वायर y और इस v नॉट स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस विल बिकम v नॉट पावर 4. दिस 2 इज कैंसल विद दिस 2, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट दिस एज g of x squared plus 2v naught square y is equal to v power 4 over g.
So this g of x squared is equal to minus 2 v naught squared y plus v naught power 4 over g. So we can write this x squared is equal to minus 2 v naught squared y over g plus v naught power 4 over g squared. So now we can write this as, if we can take minus 2 v naught square over g as a common, so this will be y minus v naught power. So this is x squared is equal to minus 2 v naught square over g into y minus v naught square over 2g. So this is equation of parabola of safety. Thank you very much. Assalamu alaikum dear students. Let's take a question of parabola of safety. That a particle is projected at a time t equal to 0 in a fixed vertical plane from a given point O with speed 2ga, of which the vertical component is v. So vertical component is v, that means it is equal to v naught sine alpha. But we have to show that at time t is equal to 2a over v, the particle is on the fixed parabola, that its path touches the parabola and its direction of motion is perpendicular to the direction of projection. So इसकी जो direction of motion है वो direction of projection के perpendicular होगी. हमें बताना है कि this angle is pi by 2. Now what we have is velocity of projectile is velocity of projectile. This is v naught and it is equal to 2ga. Angle of projectile is alpha, and the velocity, the vertical component of velocity, that is vertical component of velocity, this is v and it is equal to v naught sine of alpha. अब हमें सबसे पहले ये शो करना है कि at time t is equal to 2a over v, this particle touches the fixed parabola. तो सबसे पहले हम इस टाइम को देख लेते हैं. v हमारे पास v naught sin alpha है, सो टाइम हमारे पास हो जाएगा 2a over v naught sin alpha. और v naught क्या है हमारे पास? v naught is the velocity और वो हमारे पास है 2ga. So that is v naught is equal to 2ga square root, then time is equal to, this is equal to 2a over 2ga square root sine of alpha. Now हमें शो करना है कि इस टाइम के ऊपर पार्टिकल इज ऑन द फिक्स पैराबोला. सो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज हैं. x इज इक्वल टू v नॉट cos of alpha t and y is equal to v naught sin alpha t minus half gt square. Now we put the values of v naught and time in these equations. So this will become v naught हमारे पास है 2ga square root, which is the velocity जो कि हमें given है. This is 2ga square root, and cos of alpha into t is here 2a into 2ga square root sine of alpha. So this will become x naught is equal to this, we can cancel this 2ga with this 2ga, and this will become 2a cos of alpha over sine of alpha. This will become 2a cotangent of alpha. Now the y component is v is equal to v naught sin alpha. So we'll put this v is equal to v naught is 2ga square root alpha sine of alpha. t की वैल्यू हम पुट करते हैं, which is 2a into 2ga square root sine of alpha minus half g and square of t, that is 2a 2ga square root sine of alpha square. So now this is the value of y. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं. So this will become 2ga is cancelled with this, sin alpha is cancelled with this. ये हमारे पास आ जाएगा 2a minus half g
4a square divided by 2ga sine square alpha. So now this 2 is cancelled with this 2, and this is, now this will become, this g is cancelled with this, a is cancelled with the square, this will become a over sine square alpha. This is equal to 2a minus a into cosecant square alpha. So we can write this as cosecant square is equal to 1 plus cotangent square alpha. So this will be 2a minus a plus a cotangent square alpha. Then it will become a plus a into cotangent square alpha. So we can take a common, and this will become 1 plus cotangent square alpha. So this is y, let's say it is y1, and this is x1. So what we have, the coordinates of the point x1 y1 is equal to, x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2a cotangent alpha, 2a cotangent alpha, और y1 की वैल्यू है a into 1 plus cotangent square alpha. Now this point lies on the trajectory. हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ये जो पॉइंट है ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी पे भी लाई करता है. तो हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉइंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. तो सबसे पहले हम पैराबोला ऑफ सेफ्टी की जो इक्वेशन है हमारे पास उसको देखते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर g इंटू वाई माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2g. अब हम ये देखते हैं कि लेट से x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज माइनस 2 v नॉट हमारे पास 2ga स्क्वायर रूट है, सो v नॉट का स्क्वायर हमारे पास 2ga आ जाएगा, एंड दिस इज y ओवर g, एंड दिस इज अगेन 2ga ओवर 2g. वी कैन जस्ट simplify this expression. This will become x square is minus 4 a into y minus a. So ये expression हमारे पास बन जाता है. अब हमें इनमें ये values पुट करनी है, चेक करना है कि क्या ये हमारे पास point satisfy कर रहा है इसको. So we have to check that 4a square cotangent square alpha is equal to minus 4a. Y is again a into 1 plus cotangent square alpha minus a. So अब हम इसको simplify करते हैं. This 4 can be cancelled with this. This a can be cancelled with this square. So ये हमारे पास आ जाएगा a cotangent square alpha is equal to a 1 plus cotangent square alpha minus a. Now this a can also be taken as common, so this will become minus 1, and this is cot square alpha, और ये a हमारे पास आ गया, and this will become 1 is cancelled with 1 minus 1 is 0, so cot square alpha. So इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन को. दैट मीन दिस पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला ऑफ सेफ्टी. सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया दैट एट द टाइम t इज इक्वल टू 2 वे द पार्टिकल इज ऑन द फिक्स्ड पैराबोला. अब हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन. के लिए हम ये देखते हैं अगर थीटा हमारे पास एंगल है, देन tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx. नाउ दिस इज एक्चुअली हमारे पास जो y फंक्शन है दैट इज ऑफ t, और dx भी हमारे पास t का फंक्शन है. x हमारे पास अगर आपको याद हो तो दैट इज v नॉट cos ऑफ अल्फा t, एंड y इज इक्वल टू v नॉट sin ऑफ अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. सो dx by dt हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज v नॉट cos ऑफ अल्फा, एंड dy by dt क्या हो जाएगा हमारे पास, this will becomes v naught sin of alpha minus gt. So ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं tan of theta में, तो ये हो जाएगा हमारे पास v naught sin of alpha minus gt
divided by v naught cos of alpha. T की वैल्यू हमारे पास we know that it is 2a over v. So ये v naught sin of alpha minus g 2a over v and v naught cos of alpha है. Now simplify कर लेते हैं. Capital V into v naught sin of alpha minus 2ga divided by v into v naught cos of alpha. This v is the vertical component of velocity, so ये था हमारे पास v naught sin of alpha. So हम इसको replace कर देते हैं. This will become v naught square sin square alpha minus 2ga divided by v naught square sin alpha cos alpha. Now we know that कि हमारे पास जो given condition थी कि initial velocity is 2ga, so we can write this expression as v naught square sin square alpha minus v naught square. So this will become v naught square sin alpha cos of alpha. यहाँ से हम v naught square कॉमन ले लेते हैं. So this will become sin square alpha minus 1 into v naught square sin alpha cos of alpha. यहाँ से हमारे पास we can cancel this v naught square और ये हमारे पास हम इसको ले सकते हैं minus with the common and 1 minus sin square alpha, and this will become sin alpha cos of alpha, and this will become cos square alpha divided by sin alpha cos of alpha. We can cross this, and this is minus cos of alpha over sin alpha. लेफ्ट साइड पे हमारे पास tan of theta है, so this can be written as tan of pi by 2 plus alpha, and this is tan theta. Taking inverse on both sides, theta is equal to pi by 2 plus alpha. So which shows that direction of motion is perpendicular to the direction of projection. Thank you very much.